musics need to be altered, like game sounds will be little less. Is it better? Less. Okay, the game have been crashed. Wait for a minute. Uh, we are restarting the game because sometimes the OBS makes my game crash for no reason when I switch the windows. I don't know why does it happens, but yeah, it happens a lot, especially during the stream. I mean, with the recording, it's pretty much fine, but for some reason when we are streaming, it happens a lot. Let's make it weather a little bit clear. I think I will also reduce. No, I think I will not reduce the music sound and set the time to day. Okay. What? I think that's good. That tough break at the center is the center of this whole, the rectangle shape that we have made here. So I will just open some of the reference that I need. I will just open them into my another screen, yeah, like that. And I even have a sketch on my tablet. Let me open that as well, because that's the reference that I always see. I think large shirt. Wait a second, bro. Where are my drafts? Yeah, this is it. Yeah, like that and that. Replay this. Yeah, I think so. It's all good. Yeah, I'm all set. Let me look at my references and I will continue making something else also. What will I need to do is I will just put that kind of a wall and smear it all around the parts, and let's see what kind of a shape do we need to make out of it. I
think so. Yeah, that's all set up. Let me go a little bit far. Yeah, I think so. I need to just pull it up way too much. I think so. I think so. I will just pull it upwards. Rather, I will just use the extrude tool right here. I think this much height will be this height will be enough. I'm not sure because there will be two huge parts that are going to be being a little bit outwards on that. Let me build that thing first. Path tool. I don't even know how to use the path tool that greatly, but yeah, I have used it once or twice. Oh wait, why is there some snow around that part? Is there anywhere else? Okay, there are snow at the bottommost layer. Okay, but I don't think so that will cause any kind of error. We can leave that as it is. There is a little bit of snow here as well. Quickly removing these, and yeah, we are all set. Now let's try to make a curve like that. How do I make a curve? Not a line. Visor curve line Bresnahan. Okay, I don't know what that is. Catenary cat room spine. Let me use a catenary first, and if I use that and that, oh, that does make a curve. That does make a curve. Okay, okay. But what if I move this way, then this way, right on that path? So it will be like this. Nice, 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 nice. But what if I change its way like this? Move it. Can I also change this thing? What is this? What will this thing do? Does it do anything? Okay, it no, I don't need that anchor point. I will just delete that. Let's use the catenary. If we can actually transform it in a way to staircase and slabs, yeah, sure. Inverted, yeah, that's what I wanted. I want it to be inverted. Sphere flat custom flat spike. What does it do? Okay, okay. Shapes is the problem here. Okay, okay, got that. Looped.
I don't think so loot will do anything. I think so using stairs and stair slabs is a good thing, but don't know, bro. Okay, we can even change the amount of slack. That's a great thing, I must say. But I want it to be doesn't not have kind of handles when it comes to this. Let me use this thing like that. I think so. Hmm. It's a pretty new thing to me. Let me figure it out. Right on the stream. Okay, it's on the same plane. As we can see, the Y plane not is not a problem. Is does this looks like a curve? What if we don't use? Okay, it doesn't make much of a sense. It doesn't smooth that much, but surely. Okay, I think so. There must be an amount of having some sort of adjustment point right on that. I do think so. It's a kind of a must thing, but because it doesn't have anything, what can we do actually? Damn, dude. Because it doesn't look as smooth as I wanted it to look. That's the issue. Where are my Pinterest thingies? Right on this. Okay. Oh, nah, not this one. Not this one either. I'm just scrolling through the Pinterest images that can help me to, visualize something. Okay. Hmm. Let me see. Let me see. If we reduce this thing like that, or what if we just do this? Yeah, that's more like it. Hmm. Okay, this part is obviously way much smoother, but the upper part is it doesn't make sense. It looks weird when it comes to the upper part. Okay, from this far it may look a little bit more smoother, but nah, it's still not that much smooth. Okay, if it doesn't give me a perfect path, I will have to do it myself. I will just, nah, 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 nah. It's not making much sense to me. Okay, what will I do is I will just put some circular shape, a flat disc with a diameter of something like 26, all of course, and rotation will be 90 degrees. Hmm.
Is this one huge enough? That is what I have to see. I think so we can actually just increase the diameter slightly and not much. Can we use the staircase and slabs on this one also? Because I'm not seeing any option like that. Separate Excel, decimal sizes, center even diameters. What? Center even diameters. Oh, but okay, that is more circular for this radius, I think so. I don't know. Okay, I will just use it to make a 1/4 part. So imagine like this is the only part that we are going to use. We can actually slightly turn it back. I think the 28 is the smoothest one that we can get. Okay, we don't have much of a choice, so we will go with that. And yeah, I made it with the this thing. Let's switch it up and make it from this. Either way, we just want this part to be made. We will just delete the rest of it. Where is my delete tool? Yeah, it is connected. Yeah, it have been erased perfectly. So this is the shape that we are going to use. Is it a little small? I think so. Let's just use it for once and let's see if it is really small or not. Was I'm being confused right here, boys. And that and go down. Okay. Got to that part. Let's see if that makes sense. I think so it will work. Although I think also that slightly more may look good. If we compare the size of the flex that we are going to hang down, will it look good? I think so. We do need to increase the size. It's not much of a choice we have. Let's make it out of it's not resin bricks, and it's a weird thing. Let's make one here, move it this way, make it a little bigger. Oh no, this one, yeah, 33 is good, I think so. Let's hope this one will work. We will just erase this one. We will even break these. 1 2 3, and we will erase this one as well. Now let's move this whole part like that, and we will chuck that on the bottommost part, like that. Yeah, now let's see if okay, this is perfect, I think so.
This is good. This is good. This is good. Now we just need to copy this whole part, this one onto that side. Yeah, and then finish it. The curves have been made. Now we need to figure out about the center part. Now there are few things that we can do. If we look at the creaking, so this is the creaking spawn egg, as you can see, but if we actually place it, it have 5 glowing things. Actually I just need to use this one. Yeah, if we use this dude, look at that, it have few things that we can, take. Freeze. Okay, there are few things that we can, actually try to incorporate in this building. That is one of a unique thing that I can see is here's this mossy horn or ear kind of a thing that is growing out of his head. Okay, this is the first thing. Second thing is that the moss all around his body. But the thing is that with the shade that we are actually seeing, these shades, the pale shades we are using already, so I think that that part will not make any much sense for that. But another thing that we can do is using his eyes. Sorry bro. Another thing that we can use is using his eyes, which is none of his eyes are actually, being aligned to one another. I mean, this one is not aligned to this, and it is somewhere middle, not even the middle, it is slightly left side towards the center, and it's a weird thing if we actually look at that. So what kind of a thing should we incorporate? Also, he doesn't have we have its heart as well, and having a wood, the pale oak wood. Okay, it's not in there. Where is the pale oak? Let me just grab that from this. hmm. This is the glowing. Yeah, why is the player speed is changes according to tick speed? I think so if we are in a creative mode. What? Why is my speed is also changing? Bro, what? Hey, come on, dude. I just want to have a look at that thing.
Okay, when I freeze stick, it's all good. Well, none is facing towards me. Okay, this one is facing towards me. Okay, so this is the heart of the creaking. Can we incorporate something like this shape? If we look this into the shader, that it is going to take a little bit of time because my PC is not that great, but yeah, this is the shader effect. Can we figure out something that we can use in the center part of that? We can actually just make this kind of, how should I say, some messy shapes, random shapes like on this whole part, and then we will just make the use of Shroomlight and Occurite on this. Maybe I'm a little bit confused. Let's see. Let me have a look at this antenna. It's like mostly kind of having feel of tough and this things. So if I just use, I will just turn off the shader. There it is. Bricks, then polished, then cracked, normal bricks, and normal stone. We can also follow the similar pattern here, but in which order should I do that? Let's just throw away the copper thing. Okay, I don't care about you. I this one first, then this, this, and this. Okay, great. And then I will use some resin clumps. Oh, I don't mean to replace that. Can I have a gradient of this? Let's see, can I have a gradient of this? And oh, I can have a gradient with copper. That's great. Unexposed copper. Okay, let's see. hmm what else things? This one, dead blue, coral. Okay,
Hmm, I think so. That really does make sense. Hmm, yeah, it's more like it. And then I will use take unfreeze. Yeah, and take rate 20. Come on, bro. Hmm. I think so. This is a lot more smoother now. Now I will just use this peaceful mode again, and let's have a look at this. Okay, I think the gradient is all great. If we do this, hmm, if we check this, shrink that a little bit. Hmm, is this better now? Okay, the shape is all good. I think so. In this kind of a state, now we need to worry much about this main part. Let's draw a shape of an eye. At least have a try. Yep, this is kind of an eye. Hmm.
is my orange block palette. Let's hmm, seems good to me. Now, if I just clone this part, okay, I think so. I cannot just do that for some reason. Can I not just? Can I not just move? Now can I move this? Position size, position post to add, subtract, confirm, and can I not rotate it anywhere? It's like I'm just learning. Hello Rajvardhan bro मैं हूँ गेमर गेज आया 10 मिनट में वेट करना ब्रो मैं तो यहीं पर हूँ मैं तो कहीं नहीं जा रहा अभी I'm just learning it a little bit. Okay, there are some operations as well. Fill, replace, type, analyze. Okay, it would be faster if I just rebuild it myself. So how is it? It's on this side, then this side, and when I have that, then it have this. But after that, I have a full block, and after a full block, it's this, and then this. Yeah, it's more better than what. Yeah, it's more better that way. And if I just do this, then this, then this, then this. It looks more like an eye now. It looks awesome. Now what we can do is we can actually make a clone of it, and let's see what can we do with the shape. If I just have some shroom lights, let me have another thing with that. Shroom light, ochre frog light, and some resin clumps in my inventory. Yeah, so obviously we need to use. Okay, that's a full block. That is an issue.
the what the heck? If I go that far, yeah, it does look like an eye for sure. But if I make it that way that it goes behind like that, great. What if I make it like this kind of eye? It will look a little bit evil, that's for sure. But if I look at the creaking, where is survival mode? Yeah, if you look at that guy, it have a similar kind of orange. Hello bro, I am black. Hello, 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 Bri. Rajvardhan ji, welcome back to the stream. I'm making a design in the creative world जहाँ पे मैंने एक वुडलैंड मेंशन की साइज ली है बट वी आर मेकिंग अ रीजन फार्म आउट ऑफ इट बिकॉज दिस मेंशन लाइज like slightly under the pale garden biome. Let me show you this. My actual world have a woodland mansion which is slightly cutting this whole thing, the pale garden biome. So I'm just making something in the creative and then we will build it in the original world. But this is the design so far, but I am just struggling to find a best way to make an eye. Sorry, creative survival. So I'm just trying to have a look. Okay, what kind of a thing does the creaking have? Like if we bro डिस्कॉर्ड पे बात क्यों नहीं करते ब्रो? पर बात क्या क्या करूँ डिस्कॉर्ड पे? मैं चलाता ही नहीं हूँ एक्चुअली ज़्यादातर. And now the game is going to crash. Yeah, I forgot it, bro. The game is going to crash. No, I don't know what kind of a bug is it, but yeah, if I switch to my any other window, my OBS makes the game crash. I forgot about it. I accidentally pressed the window button. Nah, bro. So bro, Discord पे बात क्यों नहीं करते? I will check the messages अगर आपने कुछ किए हैं तो. WhatsApp पे खुला हुआ है भाई. OBS have such. I mean, bro, what kind of issue is that? I can't even switch my tabs. Finally, the game have been online now Discord पे. But the thing is, whenever I switch my window, अगर मैंने Minecraft से हटाई कुछ और तो वापस गेम क्रैश कर जाएगा. OBS में ही कुछ इशू है. वो लाइव स्ट्रीम के टाइम पे ये वाली दिक्कत करता है. ऑफ कोर्स आ जाऊँगा मैं स्ट्रीम के बाद, ऑनलाइन आ जाऊँगा एक बार अगर कुछ सच में कुछ हो तो.
बट फॉर नाउ मैं ये सोच रहा हूँ कि शेडर्स में कैसा लगेगा इन दोनों आईज में से कोई एक. Should I use some glass as well? I think so. Glass could be a better option. Maybe the glass could be because it feels way too bright. Yeah, the central part looks way too bright to me. But if I use some orange glass paints and this and some candles, let's see. Hmm. Does it block slight amount of eye? Nah, it doesn't do much. If we turn off the shader, yeah, if we turn off the shaders, that's way better that way. Hmm. Okay, that does look better. I think so. But what if I do? Hmm. I think so. This one is way better. Let's have the light effects. Okay. It sure is better than the before. Hmm. Yeah. Make a delete. Hmm. Can we smooth that out slightly more, like having a trapdoor? Yeah, but I can place one on this part. Okay, never mind. Maybe on this will make it more smoother. Not by a huge difference, but yeah, surely somewhat. Hmm. Make a clone. Uh, uh, Bro, unstable SMP की videos देखा करो bro. I have seen a lot of them and almost all of them. But उसके सिर्फ videos देखने का suggestion दे रहे हो तो okay, but देखा करो मतलब what? Yeah bro, those are actually cool. My favorite character is not Parrot. My favorite character is Spook, because he have a kind of a anti-villain attitude in him.
not the anti-villain, kind of anti-hero, I think so. Yeah, the correct term is anti-hero. I mean, he's not the villain, but he also cannot be said as a hero. He cannot be celebrated. He cannot be said like he is the great values and morals and all this. Yeah, bro, parrot is good, but the parrot is way too much, cliche at this point, because he have kind of a Naruto vibe. I mean, uh, it's like I will, if you have seen Naruto, One Piece, Monkey the Luffy, he have that kind of vibe. But Spook is different. Civilizations बनाओ, unstable SMP के जैसे एक civilization बनाओ. Unstable SMP is kind of a cinematic universe, bro. And nobody, trust me, nobody can make whole अनस्टेबल SMP ऑन इट्स ओन. उसके लिए बहुत सारे बंदों की मेहनत चाहिए होती है. उसमें मेन अगर आप बिल्डिंग की बात कर रहे हो सिर्फ, सिविलाइजेशन एज इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग, वो एक होरिस नाम का एक कोई बंदा है, बहुत बहुत पुराना बिल्डर है वो. शायद उसकी एज मेरे से बड़ी या फिर शायद मेरे ही बराबर की होगी. आई थिंक सो. Finish it on this part. I think so. This should be a little bit upward. Let's see. मज़ा आएगा सिविलेशन बनाते हुए देखने में. What in terms of building और in terms of civilization, सिर्फ buildings नहीं होती है ब्रो, उसमें एक्चुअल बंदे होने चाहिए. मैं सिंगल प्लेयर में वर्ल्ड में खेल रहा हूँ. इसमें सिविलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं हो सकता ना. सैड. Like this high? Yeah, I think so. I even think so. This will be this part. Did I mess that up somewhere? Yeah, I literally have messed that up. Yeah. I think so. It will be flipped. I think so. I think so. Let's see. Bro, let me select this and up to this, then this. Can we flip it? Can we rotate it? Okay. Okay. It's done. But this need to be slightly here, not this. Let me move that. This whole thing is one block here. Okay. By the way, Rajvardhan bro, if you are talking about the unstable, have you ever checked out the guy YouTube channel, the Horus, the main builder? I mean, of course, I think so. There is way more builder than the Horus, but I think so. Main
person that have been working with him is Horus from the start. When they've been, thinking about having a cinematic universe. Hmm. By the way, which I watched, I think, okay. Yeah, bro. It's one of my late. Actually, I've discovered his channel way too late, but not that late. But yeah, I liked his videos. It's more kind of a tutorial, but I like them. Will it look like a creaking eye? Let me spawn and creaking. Where is my creaking heart? Okay, I will get one. I think so. The lower eye have a 2 pixel gap, so it needs to be much more beneath both of the eyes. Also, it's kind of not centered in that. Okay, that is also not centered in that. Bro, don't hit me. I'm God in this world. Okay, so it needs to be a little bit more downwards. I think so. Yeah. What if I just move everything else up? Use schematics. Schematics of what? I am building this in creative by myself, and then I will use schematics, of course, in the original world. That's for sure, if that's what you wanted to ask. But yeah, I want to build as well, bro. The building in Minecraft is like painting itself. Okay, it does look like an eye now. We can actually move this, and it actually looks creepy as well. That's better in a way, because I'm trying to imitating the shape of a creaking face or eyes. Let's put that here. Peaceful back. Okay, but still we need to have a face. What is the face of a creaking? Where is the creaking? Where did he spawn? Yeah, right here. It doesn't have a lot of characters to his face, just 3 eyes and some tentacles or ears. Oh yeah, it actually disappeared at the morning that I forgot about it. Never mind. Where is his egg?
Yeah. Bro, what the. Hmm. So the only characters that is left is his tentacles. Yeah, his tentacles. Other than eyes. And it's the eyes are like, cutting from the edge of it from the both side. Okay, so I think so I will also make the similar shape here by cutting it from the both of these sides. I think so we can even move that 1 pixel, 2 pixel. Okay. Bro, can you make a lobby or hub for a server? Nah, bro. I don't know any of that shit. I'm not a lot of a, I have that kind of a knowledge in terms of that. Even because even when I played multi server one time, I've used the essential mode. So I legit don't know anything about lobby server or anything else. I'm clueless. Are these looking like, being on the same plane? It's like 1.5 block gap in this, and mm, it's 1 block gap in this. Okay, it's 1 block and 1.5 block. I think this is more closer to the creaking than this. I think so we will use the previous part, that's it. And with the creaking face again, let me. Hmm. So at when it comes to the face, this left side of the part have darkness in it. The top side have some darkness in it, and having a curve of light parts like this. Hmm. Okay. So in terms when I switch to this measurement and this measurement, if I look at this one, it goes 1 block here. If I do this measurement, it goes also 1 block here. Great. And this measurement, it's 1 block here. Okay, so measurement is not a problem. That is a great thing. Now we can just just clone it like that.
What happened, bro? Oh, it's going to break after time. No worries. I think it's time for this tool, and we will use the command replace. Replace the underside with tough bricks. I think it's also a little bit less taller when it's compared to the actual face of the creaking. Yeah, it's a little bit less taller as well. Okay, okay, okay. Have you guys ever thought the speed 2 is not that much fast enchantment? Like, look at this. It's not that fast. I mean, the soul speed is better than this speed to beacon. Having a speed 2 is like a waste. I have felt like it many times. Should we enlarge it way more than that? We will look it from this angle. Okay, we can enlarge it, but I don't want to make it look bad, like it's having all of this. I'm confused. Should I do that? Okay, let's do that. Do that. Don't worry much. Make this, then this, then this, then this. Then I will make 1, 2. Okay. Then I will make this whole, wait, this 1, 2. Now we will smear this. And we are also going to okay, it looks more like it, but I think so we need to cover it much from the top as well. Its top part also have more than the at least 2 pixel. Yeah, at least 2 pixel of gap, then 3 4 at the highest, not even the 4, maybe. Yeah, 5 the highest pixel height and 2 is the smallest, I think so. Yeah, what else are we missing?
a dark a dark shape, and then some lighter shapes like this, somewhere connecting in the middle. Okay, let's try this. Hmm. Have this, and let's have few of these are the gray parts for the deep slate. Yeah, some polished and some of this I think so. These will be enough. These will be enough for sure, bro. So you want one time block speed in speed? Yeah, I mean, bro, that's not that fast. That's what I mean, I felt like it. Maybe I'm just overly exaggerating thing that it's not that fast, but for a beacon it should be fast. I mean, this speed should be like speed one thing. Speed 2 must be like having a zoom speed like a flash, something like that. Like soul speed 3 is what kind of a speed 2 beacon should have, I think so. That that's what I think, but it's just my opinion. I don't want to be a crybaby like a Cayman 18, bro, that complains about everything, but that's what I felt like. Yeah, that's it, bro. Maybe maybe I am complaining it for no reason. Maybe I am, maybe you are right. Okay, let's draw some shapes as having this. Oh, nah, bro, I messed up. What do you think, bro? With consistent hard work by GN Sonnet. Okay, bro. Okay, bro. Trust me, bro. I am really bad with the Gen Z, kind of a slangs. I was like, you were saying with W consistency. It's like when the consistency kind of thing, but I read it like with consistency for some reason. I don't know why do I do that. एंड भाई मेरे डीसी सर्वर प्रमोट कर देना प्लीज़, मैं आपकी लाइव प्रमोट कर दूंगा. डीसी सर्वर, व्हाट इज डीसी सर्वर, ब्रो? MC server, I mean Minecraft server, or it's a actually there is a game also, the DC world or DC heroes, some kind of that. I'm not good with the terms and technical terms. Please explain me what exactly is this DC server.
डिस्कॉर्ड सर्वर, ओके ब्रो, मैं भी ज्वाइन कर लूँगा वैसे तो। शायद मैंने करा भी था आखिरी स्ट्रीम में। या आई थिंक सो, मैंने आपका ही कोई सर्वर ज्वाइन करा था। तो फिर आप क्या लाइव हो भी, मतलब उसमें क्या कहते हैं उसको, SMP वगैरह आप बना रहे थे उसमें? जी आओ कौन, आप कौन? आरो प्लीज, हेलो ब्रो। या आप बनाऊंगा, ओके ब्रो, मंडे से। ओके ब्रो, श्योर। हाय आ रहा हूँ। आप कौन, किसने इनवाइट करा? ये कौन है ब्रो? ब्रो तुम बात मुझसे कर रहे हो आपस में? DC पे बोला किसी ने। ओके ब्रो, आई डोंट नो, तुम आपस में बात कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो? इट्स मी आइकॉनिक। Let me see the face of this dude. Darken this, darken this, top part. Darken this right side of part. एक ही बंदा आया ब्रो, महामय, मैंने आपकी लाइव प्रमोट करी है। ओके ब्रो, तो ये आरव आपके DC सर्वर से, मतलब डिस्कॉर्ड सर्वर से एक ही बंदा आया। it's not a sad thing bro, don't be sad with the that मुरझाया हुआ फूल, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो। ओके ओके, थैंक यू ब्रो राजवर्धन for promoting. I will also have a look. और वैसे शायद इसमें कुछ ऐसा कुछ होता है ना कि to make the server run for a long term you need a lot of money as well. Like people have that crate system or something like that, ताकि लोग एक्चुअली कुछ बाय करें और सर्वर को थोड़ा वो हो। मेरे फ्रेंड्स के पास है सर्वर्स। नाइस ब्रो। Bro, he is looking more and more terrifying when I'm doing that. That's for sure. It almost look like a monster now.
The actual creaking is not that terrifying that I'm painting on the wall. Yeah, this dude is not terrifying like him. Okay, never mind. Mm-hmm. Not like this. Maybe. Then this. Hmm. Let me have a look at your face, bro. Right on that, and having an S shape like under this, and okay, this part is actually, bro, who actually made his face? Like under this side is whitish, this is whitish, this is whitish. Okay, under all of it, it's a little white. On this corner is black, this corner is black. Okay, this corner is black. So it's like under of all of it is whitish. This corner is... Bro, I've killed it. Creative. Okay. So all under of it is little bit white. That's good. Hmm. On top of it, it's black. So एक और बंदा आ गया, 3 वॉचिंग मेरे फ्रेंड्स के पास है सर्वर। बाय द वे ये बना क्या रहे हैं? वेट, देखो कैसे बनाते हैं यहाँ की। आई एम हैप्पी। ये सुकुना का डोमेन बना रहे हैं क्या? नो ब्रो, इट्स नॉट सुकुनाज डोमेन। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या कि दिस इज़ माई एक्चुअल वर्ल्ड। तो मैं एक्सप्लोर करते करते एक जगह आया जहाँ पे ये एक वुडलैंड मैंशन का जगह था। जैसे आप देख सकते हो ना, ये पूरा प्लेटफॉर्म एक्चुअली कोबल स्टोन का होना चाहिए, बट मैंने इसको रिप्लेस करा है कोबल स्टोन को अभी टफ से। मैं बस पेंट कर रहा हूँ। तो एक्चुअली सर्वाइवल वर्ल्ड की कॉपी है इसमें। आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग द पॉइंट व्हाट हैव डन दिस वुडलैंड मैंशन हैव बीन बर्न्ड। So I am going to remake all of it and going to make a resin farm right on top of it. So it's like woodland mansion का revamp भी है और resin farm भी है। It's like 2 in 1 thing. तो वुडलैंड मेंशन रिवैम्प भी हो जाएगा, रेजिन फार्म भी हो जाएगा, और इसलिए मैं टॉप पार्ट को एक रियलिस्टिक सा लुक देना चाह रहा हूँ क्रीकिंग के फेस का। सो ये फार्म का अभी आउटर बेस है। जैसे आप देख सकते हो ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वुडलैंड मेंशन जैसा भी लग रहा होगा आपको, क्योंकि उसमें कुछ इसी टाइप का है कि एक बड़ा फ्लोर होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा फ्लोर होता है, समथिंग लाइक दैट। बट जस्ट द बॉटम पार्ट हैव दैट फील ऑफ इट, बट the rest of it is going to be way more creative and
नॉट जस्ट नॉर्मल नॉर्मल बिल्डिंग समथिंग लाइक दैट। तो मेरा थॉट ये है, या ब्रो तगड़ा है। और वैसे मैंने इसका लोकेशन, व्हाई डिड आई चूज इट, बिकॉज व्हेन आई केम डाउन टू दिस यू नो द एक्चुअल वुडलैंड मेंशन, तो हुआ क्या कि मेरे को ये ट्री दिखा दो कि डार्क ओक ट्री था, जो कि वन मतलब सिंगल उसका नेचुरली जनरेटेड है। बट मेरे को पता चला कि इट्स नॉट स्पेशल, मोस्ट ऑफ द वुडलैंड मेंशन हैव दैट काइंड ऑफ अ ट्री, बट it have a story like because it crosses the boundary of the pale garden. So what is doing is कि यहाँ पे ये एक सिंगल मतलब नेचुरली जनरेटेड डार्क ओक ट्री जो होते हैं वो सिंगल में नहीं होते, जैसे वुडलैंड मेंशन वाले सिंगल ट्रंक वाले होते हैं, नहीं तो वो 4x4 का सैपलिंग चाहिए होता है ना डार्क ओक को। और ऊपर से थोड़ा इन्फेक्टेड सा भी लग रहा है, तो मेरे वर्ल्ड की लोर में अच्छा लगेगा कि भाई दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे ये सब क्रीकिंग का इन्फेक्शन चालू हुआ, डार्क ओक ट्री ऐसे हो गए, पेल हो गए, और ये भूतिया क्रीकिंग चचा यहाँ पे आ गए, प्रकट हो गए। तो वो लोर के हिसाब से, एक स्टोरी के हिसाब से अच्छा लगेगा। हालांकि स्टोरी टेलिंग इतनी नहीं है, पर वर्ल्ड में थोड़ी बहुत स्टोरी तो चलती है, तो दैट्स वाई आई चूज दिस वन। बट अभी तो बस क्रिएटिव प्लानिंग कर रहा हूँ, अभी इसका सब मटेरियल भी इकट्ठा करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। अभी मैंने इसके ऊपर स्केच भी बनाए थे, ये बैनर भी, ये मतलब फ्लैग्स जैसे हैं, ये मेरे उसके हैं वर्ल्ड में, एक तरह से एम्पायर का सिंबल है ये मेरे इसमें भी होगा, या दिस वन, दिस फ्लैग, दिस वन, जो कि मैं शील्ड वीड पे भी लगा देता हूँ, सब जगह लगा लेता हूँ, तो ये वाला बैनर इसमें भी जाएगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी व्हाट आई एम डूइंग करंटली। सो ये सिर्फ कॉपी है, इसमें स्केमेटिक उठा के फिर ओरिजिनल वर्ल्ड में जाऊँगा, फिर वहाँ पे सब रीबिल्ड करूँगा, ताकि मेरे को ये सब पेंटिंग वेंटिंग वाली चीज़ मेरे को बार बार नहीं करनी पड़े। इट्स अ मतलब सर्वाइवल में सीधा तो मेरे हिसाब से कि मैं पेंटिंग ऐसा इतना अच्छा कर नहीं सकता, वैसा क्रिएटिव में फिर भी कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं स्केमेटिक ही यूज़ करूँगा इसमें। Get lost, bro. Why does the creaking bros always being so stubborn? Then there is one also deep slate tiles. Yeah, these will be the tiles. Yeah. Actually, which one do you think is lighter? The smooth, the deep slate, I mean the polished deep slate, or the deep slate bricks? Because I think so polished deep slate bricks से थोड़ा सा लाइटर ग्रे होता है दूर से दिखने में, आई थिंक सो। या किस स्टोरी के लिए वर्क बना रहे हो ना ब्रो? बस ऐसे रैंडम स्टोरी। ब्रो योर मेन बेस, okay, you want to see my main base, that is also there, it's at minus 900 100 700। मेन बेस तो वैसा का वैसा ही है ये वाला, इसका काफ़ी कुछ पार्ट भी कवर अप हो गया है। और इसके ऊपर जो मेन बेस आने वाला था, जाइंट बेस, जिसकी वीडियो अभी भी मैंने नहीं डाली और वो बना भी नहीं है, मतलब उसका स्केमेटिक बनाया था बस मैंने, स्केमेटिक अभी भी है किसी और दूसरे वर्ल्ड कॉपी में। बट हाँ, ये माउंटेन के ऊपर एक और बेस आने वाला था, वो बेस मैंने बनाया नहीं, क्योंकि इस बेस के लिए मुझे बहुत सारा रेजिन चाहिए, और मैं रेजिन ढूंढने के लिए उस वुडलैंड मेंशन के पास तक गया था। और वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि उस पर रेजिन फार्म बनाऊंगा, तो इसलिए
इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए मुझे वो वाली वीडियो बनानी पड़ रही है, ये वही दिक्कत। एंड दिस इज द बेस विद द शेडर्स। वैसे ये शेडर्स में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे फॉर सम रीज़न, मे बिकॉज मैंने इसमें लाइट्स को ज़्यादा यूज़ करी हैं इसलिए। ये सब कुछ, ये ट्री वाला पार्ट, ये आयरन फार्म है मेरा, जो कि मैं अक्सर बंद ही रखता हूँ, थोड़ा साइबर पंक सी स्टाइल वाला, रेडस्टोन वगैरह। दैट्स वाई मुझे उस वीडियो से पहले इस वाली वीडियो को करना पड़ रहा है। भाई कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट रिसर्च करके बनाओ, तेरी आवाज़ अच्छी है, फेमस हो सकता है। डब्ल्यू बेस, थैंक यू ब्रो। या ब्रो मेरी आवाज़ अच्छी है पर मेरा माइक बड़ा गंदा है। मुझे एक्चुअल में कोई अच्छा माइक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इट्स दिस माइक व्हाट आई एम यूजिंग इज़ लाइक 900 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट, और इसमें मेरी आवाज़ बहुत बहुत ज़्यादा रोबोटिक से आती है, आई मीन। और मुझे मिल गया, ओके ये रहा। हम्म this C and this. रियली ब्रो, तो आपको मेरे नॉर्मल वीडियोस देखनी चाहिए, शायद उसमें आपको थोड़ी और बेटर लगे मेरी आवाज़, अगर आपको मेरी लाइव स्ट्रीम वाली आवाज़ सही लग रही है तो। बट कभी कभी होता है ना कि इंसान को खुद की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा क्रिटिक हो जाती है, थोड़ी सी, वो भी हो सकता है, सेल्फ क्रिटिक ज़्यादा हो जाता है आदमी। फिर वीडियोस बना लेना। ओके ब्रो, थैंक यू फॉर द सजेशन। SMP वीडियोस लाइक सेनपाई स्पाइडर, या ब्रो बट मैंने एक्चुअली ट्राई करी थी, सोचा था मैंने SMP वीडियोस टाइप भी कुछ बनाएंगे, कि मतलब क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन स्टोरी के साथ भी दिखा सकते हैं, बट मेरा ना तो स्टेबल कनेक्शन है, और मेरे साथ जिसने एक बार मल्टीप्लेयर के में साथ खेला हूँ मैं जावा के अंदर, मतलब बेडरॉक में तो बहुत सारे के साथ खेला हूँ जावा में, क्योंकि रिकॉर्डिंग वगैरह और द रिप्ले मोड एंड फ्लैशबैक शॉट्स एंड एवरीथिंग वो जावा में ही हो पाते हैं। ट्राई करा था मैंने, तो वो अच्छा तो एक्सपीरियंस नहीं लगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आई वाज लाइक ब्रो लीव इट, दैट्स वाई। बट हाँ, सर्वर एक्चुअली सर्वर ही होता है, दैट्स द पॉइंट। और रात को 12 बजे लाइव स्ट्रीम मत करना, बहुत कम लोग आते हैं। हाँ ब्रो, और राजवर्धन सही करा है, मैं एक्चुअली जॉब भी करता हूँ इसलिए। राजवर्धन वैसे बहुत पहले भी आया है, इसने भी मुझे बहुत सारे सजेशन दिए हैं, पर बस वही है, जॉब जॉब के साथ ही काम करना है ये सब। कभी टाइम मिलना तो दिन में लाइव स्ट्रीम कर लेना। हाँ, 6 PM पीक टाइम है, अच्छा 6 PM पीक टाइम है क्या? हाँ वैसे हो भी सकता है, क्योंकि 6 बजे मैक्सिमम सब लोग फ्री हो जाते हैं, और 9 to 5 वाले जॉब वाले, और आई मीन 10 to 6 जॉब वाले, ये सब भी।
क्लियर हो जाता होगा इन सब का भी, सही कह रहा हूँ। चल क्रिकिंग चच्चा अपना थोड़ा दिखा। ऑन द टॉप एंड दिस। ओके, इधर नहीं आएगा ये डार्क पार्ट एज पर हिज शेप। only this part will have this. Okay bro Rajvardhan, I will try to make a stream on 6 to 8 if possible, because 6-7 बजे तो मैं मेरी नौकरी से फ्री होता हूँ। 6 to 7 around that। अपना ऑडियंस रिटेंशन देखना कब ज़्यादा एक्टिव है। ओके, हाँ शॉर्ट्स काफ़ी जल्दी फेमस हो जाते हैं। या बट आई हैव आल्सो हर्ड समवेयर दैट कि शॉर्ट्स बेस जिनका सिर्फ शॉर्ट से बनता है, मतलब आई डोंट नो, आई एम नॉट 100% श्योर, बट बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि शॉर्ट्स पे सब्सक्राइबर्स वगैरह जल्दी बन तो जाते हैं, बट दोज पीपल डोंट वॉच द होल वीडियो विद देम, ऐसा किसी ने कहा है। मतलब लाइक द रियल वीडियोस फॉर यू नो आधे घंटे की या 15 मिनट की कोई बंदा डाल रहा है, तो शॉर्ट्स वाला उसको उतना वो नहीं देता है। हाँ बट सब्सक्राइबर्स या फिर मेरे जैसे थोड़ा लोअर सब्सक्राइबर काउंट वालों के लिए तो वो भी बहुत बढ़िया है फॉर श्योर। Bro, this music is lit bro. Whenever it comes, it's some of the Minecraft musics are way too good to be called as a a game music. Some of them are like actual legendary things. Cracked deep slate. हाँ बट अगर आप कुछ ऐसा करो कि बंदे कंफ्यूज हो गए एंड पूरी वीडियो देखने के लिए आप उन्हें एंगेज कर लो तो बात बन जाए। ओके ब्रो, यूज एरामैथिया ब्रो, इतने तगड़े वीडियो बना दे कि लोग क्लिप काट काट के एडिट्स बनाते हैं। ओके ब्रो, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन ब्रो। टाइम सेट नाइट, क्रिकिंग event spawned again. Let me have a look at you. Darker part on the edges. Okay. And here also the dark part on the edges. The shades will be reversed bro. We have wasted way too much amount of time। यहाँ पे शेड ऐसे आएंगे, ये डीप स्लेट ऊपर नहीं नीचे आएगा टाइल्स फॉर हैविंग डार्कर। वैसे अगर आप लोगों को ऐसा लगता हो कि हाउ कैन आई से दैट कि ये चीज़ वहाँ पे आ रही है, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, I am an actual artist as well, that's why थोड़ा बहुत
कलर थ्योरी वगैरह मेरी थोड़ी सही है, इसलिए मेरे को पता चल जाता है कि ऐसा होना चाहिए, तब भी मैं कई बार गलत होता हूँ. इट्स नॉट विद 100% accuracy, but yeah, somewhat. And the flow is more like this. I think so कि यहाँ का पार्ट जाना चाहिए, ये वाला पार्ट. वेट, फैंटम्स की आवाज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है. ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट हो गया है. यहाँ से कुछ ऐसा कट होना चाहिए, इस टाइप का. बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे ही करते हैं. अच्छा, ऐसा वीडियो के स्टार्ट में बोल दोगे तो लोग क्यूरियस हो जाएंगे. क्या बोल दूंगा भाई इतने? जैसा मैंने आज माइनक्राफ्ट में कर दिया. ओके, अच्छा, समथिंग लाइक दैट. आज मैंने माइनक्राफ्ट में ऐसा कर दिया कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे, ऐसा कुछ लाइक बल्कि जैसा स्टार्टिंग में अक्सर बोलता है, उस टाइप का कुछ. थोड़े बहुत मॉड्स भी लगा लो. ओके, एंड वीडियो बनाओ एंड किसी का सर्वर प्रमोट करो. ओके, एक अच्छी से स्क्रिप्ट लिखो. आया ब्रो, स्क्रिप्टिंग इज समथिंग दैट आई नीड टू वर्क ऑन. Let's do this. Okay. If you can make video like Parrot X2, then you are a goat. Bro, उसकी जैसे एडिटिंग में कर सकता हूँ, बट स्क्रिप्टिंग इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो अभी मैं को इतनी अच्छी स्क्रिप्टिंग नहीं आती. द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. Scripting is something. Dialogue writing is scripting. Good, this part I haven't done. It is looking somewhat like. Yeah, bro, his video is actually crazy. But for some reason कि मुझे इसकी स्टोरी ऐसे बहुत अच्छी लगती है, for sure. बट अनस्टेबल यूनिवर्स की फेवरेट करेक्टर फिर भी मेरे लिए स्पोक ही रहता है, पता नहीं क्यों. शायद स्टार्ट भी शायद पैरट नहीं किया था. मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग, पर शायद ये स्टार्ट भी पैरट नहीं किया था. आई मीन द आइडिया, शायद लाइफ स्टाइल का भी आइडिया उसी का था ओरिजिनली.
Yeah, bro, I saw the thumbnail. Bro is underrated. Who is underrated, bro? Yeah. Acha, I am underrated. Yeah, bro. Thank you, bro. If you think so, I deserve more than that. Maybe, maybe, maybe the main reason for the views in YouTube is something else. Not just the thumbnails and other things. Maybe something else is also needed. The right kind of marketing. And I am bad at marketing, bro. Trust me, I am bad at it. That's why. कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो मालूम पड़ेगा कि असली मार्केटिंग करते कैसे हैं यूट्यूब की। ना ब्रो, that's why bro, let me have a nice look at him. hmm uh, these shapes have been done, I guess. The top part is more gray. Okay, bro. Thank you, bro. Aro. Thank you. मैं एक्चुअली थंबनेल बनाता हूँ तो मेरे को है ना, आप मानोगे नहीं, 1 घंटा में बस घूरते रहता हूँ अपनी स्क्रीन को। मतलब वो बार बार इतनी बार चेंज करता हूँ, मैं इतनी बार चेंज करता हूँ, पूछो मत। 1 घंटा 2 घंटा में बस घूरते रहता हूँ उसको। Now this part is also supposed to be darker. Along with like that, then a little bit more darker sides in this part, and some more deep slate and the cracked ones, cracked. Okay, this is also set. This curve, what if this curve can make a connection with those, like then some bricks like that. Hmm. कभी ओके, या कभी SMP वीडियोस बनाओगे तो मेरे को DM कर देना, DC। ओके, या मुझे कर देना, मैं बहुत प्राइवेट SMPs में रह चुका हूँ। ओके ब्रो। वैसे मतलब मेरे व्यूअर्स में से 5-6 लोगों ने बोला है कि मतलब वो SMP वीडियोस वगैरह में आ सकते हैं, बट मेरे को सेटअप, सर्वर सेटअप वगैरह और वो सब मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है। जैसा मैंने बोला था, मैंने मल्टीप्लेयर जब भी खेला है मैंने एसेंशियल मोड के साथ खेला है, तो वो आपके गेम आपके PC को ही सर्वर बना देता है। दैट्स वाई। तो कभी मेरे को थोड़ा नॉलेज आएगा, या फिर ये राजवर्धन ही अगर कोई SMP वगैरह चलाता है तो शायद उसी में ही कोई वीडियो वगैरह बनाने का ट्राई कर लेंगे, SMP का पर्टिकुलर। क्योंकि मुझे भाई सर्वर सेटअप करने की तो थोड़ी की नॉलेज नहीं है।
ट्रस्ट मी ब्रो. हम्म. नाइस ब्रो. कभी कोई अच्छा आइडिया होगा ना, कोई अच्छी स्टोरी या कुछ अच्छी स्क्रिप्ट, तब अपन बिल्कुल करेंगे ये सर्वर. क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कोई बहुत यूनिक स्टोरी नहीं है. आई I मीन mean, अरे तुमको पता है कि वो चीफ गाय के साथ में एक उसका दोस्त है, उसका नाम एम से था कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा. माइक है, क्या नाम है उसका? इफ यू नो द यूट्यूबर चीफ गाय. आर्ट को कर दूंगा. मेरे दोस्तों को आता है ऑलवेज ऑनलाइन सर्वर बनाना. ओके, आई हैव पेड सर्वर. उसको कैंसिल हो गया. ओ ब्रो यो. ओ दैट्स सैड ब्रो. व्हाट्स हिज एज ब्रो बाय द वे? जो तुम्हारा दोस्त है उसकी एज क्या है? must be like 16 17 something like that. That's sad bro. 15-16 तो बहुत ही छोटा बच्चा है, मतलब मेरे हिसाब से. बट आई एम प्रीटी श्योर कि वो सही हो जाए. कैंसर इज बैड ब्रो फॉर श्योर. ओके ब्रो, बाय राजवर्धन, गुड नाइट. टूटा हुआ सांस हूँ मैं. हाँ मतलब आई मीन जेन्युइनली ब्रो, इट्स मतलब 15-16 साल का बच्चा है, उसको कैंसर है तो थोड़ा थोड़ा खराब तो लगता ही है. देख एक्चुअली जब मैं बहुत छोटा था, लाइक इन स्कूल, कोई एक डांस टीचर थे मेरे, उनको बहुत कैंसर. तब वो करीबन ऐसे 20 साल करीबन के थे वो. तो वियर्ड तो लगता है देखो, मतलब सैड तो है ही सही, पर वियर्ड भी लगता है कि भाई बंदा अगर वास्तव में आपका दोस्त ही है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई अपने साथ ही रहता है, फिर भी क्या है, टच थोड़ी अजीब लगती है. सबसे पहले आपको बताया था.
इसमें मुझे कभी बिट्रे नहीं किया. That's nice, bro. Bye, bye, Aruf, please. Bye, bye, bye. Bye, Rajvardhan. Bye. शायद आरव राजवर्धन को बाय बोल रहा है, मुझे नहीं. सॉरी. सो आई थिंक सो क्रीकिंग का ये म्यूरल थोड़ा तैयार हो चुका है. आई थिंक सो वी कैन यूज दिस as for the reference printing painting kind. I You are precious. Oh yeah, bro. अगर अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारे लिए स्ट्रीम से पहले एक बार कह देता हूँ. एंड रिमेंबर दैट यू आर प्रेशियस. बाय बाय राजवर्धन. Yeah, it's like my saying goodbye line. आरो if you don't know, that's why वो ऐसे बोल रहा है. I mean it's my saying goodbye in a different way. तो वीडियो के एंड में ऐसे बोल देता हूँ मैं, ऐसे F5 मोड लगा के यार, एंड देन से एंड रिमेंबर दैट यू आर प्रेशियस. बाय बाय. तो इसलिए राजवर्धन बाय, गुड नाइट. हाँ ब्रो, तकिया कलाम. थैंक्स ब्रो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ओके सो अब इस क्रिकिंग के चेहरा बहुत बहुत दूर से देखते हैं. क्या ये क्रीकिंग की तरह लग रहा है? तो हाँ, क्रीकिंग के चेहरे का जैसा लग रहा है, पर थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक, थोड़ा डरावना ज़्यादा लग रहा है वैसे मुझे. मतलब घिनौना टाइप का, थोड़ा डरावना. बट आई थिंक सो इट्स गुड. फ्रॉम दिस फार इट almost looks like a creaking face, a real painting kind of. 12:30. What is 12:30? Okay, it's time. 12:30 बजे. Okay.
I was like, is it some kind of meme as well? Like 6 7 is a meme. Now let's make a pillar around these two. Hmm, let's see, let's see. Let's use some other kind of stairs like this. Remove this wall. Yeah, it's more like it. It's more like it. I think so. यहाँ पे slabs लगा के. What if I do this again? This is also nice, and I will just turn it to peaceful because I don't want to hear zombie growling for no reason. And do I have a bar somewhere? No, I don't have a bar. Let's have a bar. And iron. Okay, I have the iron bar already. Let's have that here. Yeah, I think so. It works. And then some candles on top of it. Candles. I don't know why I don't like the white candles. The normal yellowish candles is more better because I mean white is way too white. भाई अंदर भी डाल दे, कंजूसी मत कर. ये डब्ल्यू डिजाइन. ओके, थैंक यू ब्रो, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. हाँ बट या, यू आर राइट. Come on, lit up, lit up and lit up. Yeah, good. Now I think so this can be this stylite, or maybe this can be polished, and from this we can turn it into like that. I think this gradient is good enough, good enough, good enough. And then we will just expand this whole area using smear. We don't need that extra part for now. I think so पिलर थोड़े छोटे छोटे तो नहीं लगेंगे. I mean थोड़े पतले.
Nice one, bro. Yeah. Yeah, actually, you're right. There are way too much amount of candles in that, in terms of colors. ये आई थिंक सो, ये पिलर थोड़ा मुझे पतला लग रहा है, थोड़ा पतला। एक काम करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं, और यहाँ पे कोई दूसरा बड़ा पिलर सोचते हैं इस एरिया में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा पतला लग रहा है, लाइक दिस मच। और लेट्स mirror this at the top, तो ये बेस हो जाएगा। ये मोटा इतना शायद से होना चाहिए। मेरे को ठीक लगा, पतला तो है, हड्डी जैसा दिख रहा था। हाँ, वैसे थोड़ा रिब्स जैसा तो लग रहा था, स्लैब्स। सम वॉल्स, वॉल्स कहाँ गई? कोई बात नहीं, दूसरी वॉल्स होंगी मेरे पास, ये रही। इधर वापस से अगर मैं पॉलिश्ड वाला ये लगा दूँ, and then कुछ polished slabs like this, this and this, और इस पार्ट को फिर वापस मुझे polished वाले वर्जन से रिप्लेस करना पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट। 2D लग रहा है अब, अच्छा है। हाँ ब्रो, थोड़ी टेक्सचरिंग तो करनी पड़ेगी, 2D लगता है तो इतना थोड़ा वियर्ड हो जाता है। आई अग्री। आई मीन single things makes it look bad. Iron bars. What? Okay, chains are pretty good as well, and some iron bars. Let's see what if we do it. I think इसको इनको ऊपर रखना चाहिए, चेन्स को फिर ऊपर रखना चाहिए ऐसे।
तो अपन चेन्स को ऊपर तक एक्सटेंड कर देंगे, मे बी दैट वुड बी अ गुड आइडिया। बस चेन थोड़ी डार्क है, ब्लैक सी कलर की। ऐसे ही ऊपर तक लाइन बना के देखना कैसे लगेगा। ऊपर भी यही डिज़ाइन बना दे, ऐसा लग रहा है नीचे से मोटा हो गया है। LAWL, हाँ वैसे मोटा हो गया है ज़्यादा। लेट मी सी। आई डोंट नो ब्रो, ऐसा लग रहा है कि नीचे ज़्यादा मोटा है। लेट्स टेस्ट इट। Let's use some andesite at the bottom part. Where is my replace? I think so. कुछ पार्ट पे andesite लगा दें, और स्टेयर्स में भी कुछ andesite की स्टेयर्स ले लें अगर। What? No, not on this. I think this one will be normal stairs. Where is my diorite stair? Yeah, this one. This one will a diorite. Yeah. And this one will be andesite. This one can be diorite. Yeah, but it's not transition smooth नहीं लग रहा, बस ये प्रॉब्लम है इसमें। ट्रांजिशन थोड़ा स्मूथ होता तो ज़्यादा बेटर होता। जैसा बैड वॉर डिफेंस करते हैं वैसा, ओ द डायमंड शेप वन, लाइक दिस। लेट्स सी। एक्चुअली मेरे को ट्रांजिशन सही नहीं लग रहा है इसका। दैट्स द प्रॉब्लम that I'm seeing here. I mean, from this far, it doesn't make such a difference. No, it does make a weird difference. I think let's make it back to diorite. Is there any other block that I can use? Let's see, from this to this we can use smooth stone is a good option, and clay. Actually I have the smooth stone. Okay, smooth stone is a good option. So if I use this, for the, okay, it's making better transition now. Yeah, you can use one here as well. Now we can leave that. You can leave that as well. I think so. This is quite good. Now the bottom part is set, I think so. But the point about having a texture is that it looks good from, like here. No, I can't even see that from like here. It's smooth. It looks like it have been, been
destroyed or like that a little bit, like weathered a little bit, but from this point it looks ugly. It's like, what is this palette, bro? But yeah, that's what you have to do with the big builds, maybe. I think when it's going up, we will use smooth one first. Then I will use this pale wood. Yeah. Then I think so we will use the logs. Hmm. This is a good transition, but it is not making the flow as per the bottom part. I think this is better now. मेरी सारी बिल्ड से ज़्यादा अच्छा है ब्रो ब्रो ना ब्रो, सारी बिल्ड से ज़्यादा। ओ देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि यहाँ पे ये वॉल इससे कनेक्ट हो रही है, इस वाले साइड से नहीं हो रही है। बट इज इट रियली अ प्रॉब्लम? आई थिंक सो। ये ज़्यादा दूर से पता भी नहीं चलेगा, बट ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वॉल से कनेक्ट कर देगा। मतलब दूर से वैसे वो 5 एक पिक्सल का फ़र्क शायद ज़्यादा पड़ा नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है, पर शायद चल जाए, मे बी। Yeah, this is better. This is definitely better than that. Yeah, now I will get that. No, this one. Hmm, this is better. Oh, my neck. My neck hurts, bro. Time set. Take back. Let me grab a glass of water because it's 1 p.m. and I don't think so I will wake up for really huge amount of time, but yeah, I think so we should use quartz in that. I think so, but let's have a cup of water first. Let's have a BRB.
it was a nature school as well. For sure, it was a nature school as well. क्या है कि टंकी भी तो खाली करनी होती है bro. I messed up, bro. I legit messed up. Single wrong click. Where are my one of the favorite light source and roads? Hmm. Quartz, normal, smooth quartz. Let's have these, yeah, and this. Let's try to use these blocks. And some fence. That's cool. The world underrated was made for, bro. Thanks, bro. Thanks. Mm, mm, okay, I can't attach. No, I can attach if I just, do this instead. I mean, no one will notice that I haven't put a chain in there because it is crossing the boundaries with the wall. I am a sloppy builder. I don't care about that, bro. Mm. Where are my bars? This is the bar as well. Okay. So that can be the top part. Okay, now making this.
it connecting? Yeah. Mm, okay. Actually, we can do something on this part. What should we do? What kind of a should we put this block? But with shaders, will it grab too much attention? Yeah, it is grabbing too much attention at that part. Hmm. मैंने आप अपने दोस्तों को बुलाया है. ओके, थैंक यू ब्रो. वाओ. Ilikepai 7. That's something of unique name that I've read ever. Let me read it again. Ilikepai. Hello bro. How are you? हाँ ब्रो, आंखें चमक रही है. बट वही मैं देख रहा हूँ कि आंखों के साथ साथ पिलर में सेंटर में जो फ्रॉग लाइट लगाई वो अच्छी लग भी रही है कि नहीं. व्हाट इफ वी जस्ट यूज अ ट्रैप डोर टू कवर इट अप. लाइट सोर्स हो जाए बट maybe maybe a shelf. Let's try a shelf. I think shelf will be better. Where is my shelf block? We'll destroy that, and yeah, my shelf is where? This is my shelf. If I या शेल्फ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत तगड़ा बिल्ड है. कौन सा शेडर लगाया है ब्रो? ब्रो ये कॉम्प्लीमेंट्री. थैंक यू. वैसे आ रहा हूँ. एंड एलिकापाई ये है कॉम्प्लीमेंट्री अनबाउंड. बट इसमें मैंने बहुत सारी सेटिंग्स चेंज करी, जैसे कि ये क्लाउड्स अलग हैं, ये इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है मून का वो वाला है. तो बहुत सारी सेटिंग्स वगैरह बहुत कुछ चेंज करा है. बट कॉम्प्लीमेंट्री अनबाउंड है. थोड़ी सेटिंग्स ऊपर नीचे करनी पड़ेगी पर सेम लुक लाने के लिए. आई थिंक सो दिस पिलर इज रेडी. या आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा मुझे कुछ करने की इच्छा भी है इसमें, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट होने के उसमें एक बात बताता हूँ. जब भी अपन कोई पेंटिंग भी बनाते हैं, इफ़ वी थिंक कि अपन इसको और बेटर कर देंगे और बेटर कर देंगे, तो मैक्सिमम टाइम मेरे को ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए. जहाँ पे तुम्हें लगे कि हाँ ये हो चुका है तो उसको उतना ही रखो, क्योंकि बिकॉज अपन अक्सर उसको ख़राब कर देते हैं. Yeah, let's use some. Where are my other slabs? Yeah. The lower slabs. Thank you bro. Brother, बनाते कैसे हो ये? Bro, it's an tool name as Axiom.
अगर आप टूल की पूछ रहे हो तो। बाकी अगर आप ऐसे पूछ रहे हो कि आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो मैंने एक्चुअली एक स्केच बना रखा है। एक स्क्रीन में मैंने स्केच को खोल रखा है, मतलब एक रफ आउटलाइन जैसी कि मुझे उस तरह का कुछ बनाना है। तो ये 3 आंखें वगैरह वगैरह मैंने उसमें से स्केच में बनाई थी, तो उसके बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको माइनक्राफ्ट में जितना ज़्यादा उसके पास ले जा सकूँ, उतना उसके पास लेके जाता हूँ उसकी आइडिया को। मैं भी आर्टिस्ट हूँ। ओ आरव, आप भी हो? ग्रेट ब्रो। माई तो अलग लेवल का बंदा ब्रो। थैंक यू ब्रो। ओके, आई थिंक सो कि यहाँ पे पिलर का दी एंड हो चुका है। हाँ, या आई थिंक सो। इससे ज़्यादा मैं पिलर को ओवर एडिट ना ही करूँ तो अच्छा है। Let's make a clone of it. Is it selecting the bottom part? Okay, it is selecting. तो I think so मुझे इसका क्लोन को वहाँ ले जाके पहले इसके पार्ट्स को रिमूव करना होगा, लाइक दैट। ये वाला शायद जाएगा। यहाँ के टेक्सचरिंग को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। If I do okay. Now we can move this. Let's move all of it. Nicely done. Now we just need to do this, and this one also, this underside. Okay, so pillars are complete. बीकन लगा, बहुत अच्छा लगेगा मतलब भाई। और लेवल मीटर से बाहर का बंद है या लेवल मीटर से बाहर का बंद है ये, मतलब लेवल मीटर से बाहर का बैंड है ब्रो। कैन यू एलैबोरेट? हमको बात समझ में नहीं आई। वैसे बीकन की सही पोजीशनिंग तो करनी पड़ेगी यार मेरे को, क्योंकि बीकन मैंने अभी तो ऐसे ही साइड में लगा रखा है।
वैसे इफ़ यू गाइस डोंट नो कि ये फार्म भी मैंने डिज़ाइन करा है, ये जो भी है खुद से ही दिमाग लगा के। तो इसमें एक पीछे क्लॉक है, ये एक ओरिजिनली कोई हर्मी क्राफ्ट का कोई बंदा है, उसका नाम है ईथो। उसका कोई डिज़ाइन है क्लॉक का, मतलब वो बहुत सारे रेडस्टोन के बिल्ड्स में इसको यूज़ करता है, कॉपर क्लॉक। तो ये वो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है इसको आगे पीछे छोड़ने के लिए, बट दूसरी तरफ मैं स्कल्क सेंसर को यूज़ कर रहा हूँ दूसरे पिस्टन के उसमें, ताकि यहाँ से एक्स्ट्रा रेडस्टोन का सिग्नल नहीं जाए। सिर्फ एक स्कल्क श्रीकर, नॉट द श्रीकर, द स्कल्क सेंसर, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, मुझे इसका नाम याद नहीं है। इसका नाम क्या है, कैलिब्रेटेड स्कल सेंसर या। तो मैं दूसरी तरफ के रेडस्टोन सिग्नल के लिए कैलिब्रेटेड स्कल सेंसर यूज़ कर रहा हूँ। आई मीन लोग इसको यूज़ पता नहीं बहुत नहीं करते हैं, मेरी तरफ से करना चाहिए स्कल सेंसर को। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। तो इसमें होता ये कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है कि ये हार्ट हैं, ये सारे वुड आगे पीछे होते रहते हैं क्लॉक से। जितने भी आसपास जो भी क्रीकिंग्स आएंगे वो इसी प्लेटफॉर्म में स्पॉन होंगे। तो ये काम ऐसे करता है कि कलेक्शन सिस्टम में लोग अक्सर इस पे वो बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको, पिस्टन अंदर पुश करने के लिए। बट मैं सिंपल से सिंपल रख रहा हूँ इसको, और अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूँ और टाइम को कर दूँ मैं नाइट, तो ये सारे के सारे इसी जगह स्पॉन होंगे। बाकी सब मैंने स्पॉन प्रूफ कर रखे हैं। अब मुझे बस इसमें सर्वाइवल मोड में जाना है, ठीक है। अब मैं जैसे थोड़ा थोड़ा नीचे गिरते जा रहे हैं, तो मुझे बस बीच में एक बार देखना है ताकि ये सारे नीचे कलेक्ट होते जाएं। अब जैसे इतने कलेक्ट हो चुके हैं, तो ये फिर भी वापस और नीचे गिरते जाएंगे और मैं इनको फिर से देखूँगा। वैसे में कलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये सारे के सारे कलेक्ट हो चुके हैं, इस गधे को छोड़ के एक को। हाँ, अब यहाँ से अपन को नीचे जाना है। वैसे आप इससे भी आ सकते हो, ये वाटर एलिवेटर से वैसे नीचे आ जाओ, फिर यहाँ से स्वीपिंग एज वाली सोड लो, और फिर यहाँ से बहुत सारा गेम में लैग भी क्रिएट होएगा क्योंकि बहुत सारे एंटिटीज़ गिरते रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये वैसे मैंने इसका कलेक्शन नहीं बनाया है, मैं सोच रहा हूँ नीचे एले कलेक्शन सिस्टम बनाऊँगा जो एले ही कलेक्ट करेगी। बस आपको स्विंग करनी है और ये आइटम गिरते रहेंगे सब तरफ से। अब अगर मैं क्रिएटिव में जाऊँ, आई हेट द फैंटम्स या। तो एले कलेक्शन सिस्टम से क्या होगा कि एले इस पार्ट से भी, ये जो इसके ऊपर गिरे हुए ये जो रेजिन है क्लम्स, क्योंकि नीचे तो बहुत सारे हैं ही हैं, ये सारे के सारे इतने सारे गिरे हुए हैं ही सही। ये अपन ने कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाया है तो एफिशिएंट भी होता है। बट ये वाले जो कलेक्ट करने होते हैं ना, ये सिर्फ एले ही कर सकती है। तो अपन एले कलेक्शन सिस्टम बनाएंगे इसमें, जो कि अभी सेटअप नहीं हुआ है, बट मैं सेटअप कर दूंगा बाद में। अभी तो सिर्फ ये मेन रेजिन फार्म है। रेडस्टोन सिस्टम देखने के बाद तेरा हो रहा 99 है। थैंक यू ब्रो। थैंक्स ब्रो। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मेरे को ये बनाने में टाइम बहुत लग गया। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जीनियस हूँ रेडस्टोन का, हाँ, पर काम कर जाए ऐसी चीज़ तो बना लेते हैं। बट हाँ, ऐसा भी नहीं कि मुझे एकदम जीनियस, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ मैकेनिक्स यूज़ हुई है ना, जैसे इनका कलेक्शन हो, वो सिर्फ वाटर मैकेनिक्स है, बहुत ईजी।
ये सेकंड पिस्टन के लिए सिग्नल के लिए मैंने कोई रिपीटर कंपैरेटर वगैरह का कोई सिस्टम नहीं बनाया है। मैंने इसको स्कल्क सेंसरसली यूज़ करा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक है ना सिग्नल ट्रैवल करने में एक टाइम लगता है। जैसे आप देखोगे ना ऑडियो सिग्नल ट्रैवल करता है उसमें डिले होता है ऑलरेडी। तो इतना सब कुछ रेडस्टोन कंपोनेंट लगाने की ज़रूरत है ही नहीं जब अपन यहाँ के पिस्टन की आवाज़ से ही वो यूज़ कर सकते हैं। तो और सिंपल चीज़ रखते हैं और उसमें मेन रेडस्टोन का काम सिर्फ है कि ईथो हॉपर क्लॉक है बस ये मेन रेडस्टोन का काम है। ऐसा अगर अपन इजी से इजी रखोगे ना तो वो मेरे को लगता है कि बेस्ट होता है जितना इजी हो सके रेडस्टोन को। हालांकि लोग एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा फार्म बना देते हैं और बिल्कुल खतरनाक सा और एकदम मतलब हद से ज़्यादा मुझे वो सब पसंद नहीं है। मैं चीज़ें सिंपल रखता हूँ क्योंकि मेरे को समझ में भी आनी चाहिए ना। सो आई थिंक सो कि इस पार्ट को अपन अभी इतना ही रखते हैं क्योंकि इसके बाद अपन को इसके साइड्स भी यूज़ करना है क्योंकि पिलर्स तक का मेन पार्ट यूज़ हुआ है। इसके साइड्स अभी बाकी हैं या ये पीछे जो क्वार्टर सा कर्व है एक वियर्ड सा इस पे भी अपन को बिल्डिंग लगानी है। तो अभी काम बहुत सारा है इसमें बट आज की स्ट्रीम को यहीं पे एंड कर देते क्योंकि 1:30 बज चुकी है रात के और ज़्यादा देर तक तो शायद लोग जगेंगे नहीं और मुझे भी नींद आ रही है। सो विद दैट आई विल से नमस्कारम टू यू ऑल एंड रिमेंबर दैट यू आर प्रेशियस। बाय बाय।